ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम है फैजान बलोच, हु इज द COO ऑफ SEEME प्रोडक्शंस। और मैं लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि SEEME प्रोडक्शंस एक प्रोडक्शन हाउस है जो कंटेंट क्रिएशंस करता है, TVCs, DVCs वगैरह वगैरह। और SEEME प्रोडक्शन के बारे में तो हम बहुत सारी डिटेल्स लेंगे फैजान से खुद से ही। ऑलराइट फैजान, जो हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा ऐसा है कि ब्रांड बोलता है में हम पहले सक्सेसफुल स्टोरीज सुनते हैं अपने गेस्ट की और उसके बाद उनके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। सो आई एम श्योर आपने अब तक बहुत सारी कामयाबियां हासिल की होंगी, बहुत सारी अचीवमेंट्स रही होंगी। हम पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की? सो योर जर्नी। Interesting question actually. It's been almost 17-18 years that I have been working in Pakistan. I started my career with Lexan Group, started with CyberNet. Brilliant first couple of years because जो learning मुझे CyberNet की तरफ से मिली, that was brilliant. I think CyberNet एक बहुत पुराना ऐसा ब्रांड है जिसको हर कोई जानता है because CyberNet ने ही हमें इंटरनेट से इंट्रोड्यूस कराया था। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। And from there I moved on to FM96. From there I moved on to an ad agency, Manhattan से I moved on to Sony Ericsson Pakistan. Used to be heading their trade marketing का पूरा wing here in Pakistan by the name of Promotrix. From there my journey took me to Group M Pakistan. I was working with Group M for almost 5 years. Started as a senior manager on strategy and activation. I think I was there for almost 5 years, and I moved on. I think I took a leave as the head of strategy for all the corporate clients. From there I moved on to Hum TV. I was there head of network marketing. And from there I moved on to SEEME Productions. It's almost been 9 years at SEEME Production. Started as a producer and now working as the chief operating officer of the company. That's amazing फैजान। I'm sure ये जो आपने हमें पूरी स्टोरी सुनाई है इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे होंगे और मैं और भी इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में जानना चाहूंगी। बट अ ग्रेट लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट यू हैव जॉइंड। मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि व्हेन डिड यू डिसाइड कि आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन इसी डोमेन में अपने आप को ग्रो करना है, अपना करियर बिल्ड करना है? I think a lot of it goes from an understanding that my father has always been a PR guy. He had been associated with PR and advertising for almost 35 years with State Life. I think I got it from him, the gift of gab. And that is how I decided that this is what I really want to do. I tried my luck with the chartered accountancies of the world and all other things that were there. But somehow the other I was always inclined towards marketing advertising more. And when I got the opportunity in 2001 I joined in IBA. And 2003 after post graduation, since then I haven't looked back. It's only been marketing and advertising. वंडरफुल। तो बहुत अर्ली स्टेज पे, बहुत इनिशियल इयर्स में आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी जरूर थी कि आपको मार्केटिंग में ही अपना करियर परस्यू करना है। दो चीजों की क्लैरिटी मैंने हमेशा अपने पास रखी। पहली कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, किस इंडस्ट्री में काम करना है, दैट वाज ऑलवेज विद मी। तो हमेशा से उसको मैंने अपना एक वो रखा हुआ था। एंड द सेकंड, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज द फैक्ट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर अ कंपनी दैट आई वुड वांट टू गो एंड वर्क एवरी डे। मैंने हमेशा उन कंपनीज में काम किया है, उन पोजीशंस पे काम किया है जहां सुबह उठ के आपका दिल चाहता है वापस जाके ऑफिस जाने का। बिकॉज आई पर्सनली थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन विद इन द कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल दैट वी हैव हियर इन पाकिस्तान कि यू हैव टू एंजॉय योर वर्क. You have to enjoy your work. The day you feel that you're not enjoying your work, probably that's one of the signs that you need to move forward. That's my understanding though. No, I think that's a brilliant thought क्योंकि बहुत सारे लोग struggle करते रहते हैं all their life और उनको ये clarity नहीं होती कि क्या करना चाहते हैं लाइफ में। इतनी सारी कंपनीज के बाद भी people are still not clear about it. So अगर ये आपकी understanding शुरू के ही स्टेजेस पे थी, I think that's truly God gifted. Sweet of you. It's a blessing.
It surely is a blessing. It surely is a blessing. I'll tell you the reason why. Because देखें, I personally think कि जब भी आप किसी चीज को, जैसे हमारे बड़े एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जैसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं. नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड जो है उसको एक नेगेटिव उसमें अंडरस्टैंडिंग में लिया जाता है. हाँ. इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया जाता है कि यार 3 महीने में अपने आप को प्रूव करना है कि ये प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है मुझे वो परमानेंट कर दिया, कंफर्मेशन मिल जाए. Whereas this probation period is just not for the company, it is for the employee as well to understand whether he is a good fit for the company or not. And I don't think so. If you have it in you, if you know what that आपको काम आता है और आप कर सकते हैं, तो you should not be afraid of the fact कि यार इसके बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. There have been times in between I've actually started my own marketing services company as well in between this career for 1.5 years. Okay. And I was doing very well. But at one given point of time I thought कि I would want to move out of this because it was just not my ball game. Actually passed on to everything to my partner and I moved on. I personally think कि जब तक वो इंस्टिंक्ट आपके साथ है, आपको उस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को रखना जरूर चाहिए. हम गट मार्केटियर्स की बात करते हैं. I believe in gut marketing. You have to take yourself as a brand in itself rather than just another product in the market. If you have to make a brand out of yourself, you need to know what exactly is the competitive advantage that you can provide to your employer. ठीक है, आप क्या वैल्यू उसको एडिशनल प्रोवाइड कर सकते हैं. If you are 100% sure of what you're providing to your employee, you should not worry about anything. That's amazing. That's a great thought. So मुझे क्योंकि अभी पता चला कि आपकी खुद की भी एक कंपनी थी बीच में जो आपने फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया आफ्टर 1.5 years. So why was that? क्या रीजन था उसका? Because usually लोग एंटरप्रेन्योरल साइड पे ज्यादा जाना चाह रहे होते हैं आजकल कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे अपनी कंपनी में, उनकी अपनी चॉइसेस होंगी हर चीज को लेके. वो चीज आपने ड्रॉप कर दी एंड यू मूव बैक टू द जॉब मार्केट अगेन. जब मैं पहली मर्तबा एक रेडियो चैनल पे गया था तो मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास आप जहाँ काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हथियार आपके पास है, आपके पास आवाज़ है. Okay. और जब ये आवाज़ आपको मिलती है तो you have to be very careful on how and when you use it. So seriously speaking, there were quite a couple of instances within the corporate world where I thought it's not my kind of an understanding. I've always tried to be very ethically correct in how I work and where I work. Okay. And that is something that I thought was missing. So that's why I moved on from that particular area. I think इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं उस बात को लपेट नहीं सकता था उस चादर के अंदर. But that is one of the reasons. Oh, yeah. Okay. Yeah. Great to see the kind of clarity you always had on all these things. Usually career counseling लोगों की चलती रहती है all their life and they want to do so much in life. लेकिन एक focused होके एक career को build करना which you did and of course you did a commendable job. That's truly amazing. So फिर मुझे बताइए कि आपने फिर SEEME Productions में किस तरह का आपका स्टार्ट रहा and how did the journey begin at SEEME Productions? A very interesting scenario. SEEME Production is जो मेरे बॉस हैं, the owner of SEEME Production, नवीद अरशद. He has been a most integral part for me to have been here for almost 9 years now. Okay. He's backed me on all my decisions. If I've made a call for the company, he's backed me on it. Okay. It's a very open understanding. If you want to talk about something, so you're not asked कि नहीं तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते. So you can. We have a very, very, very brilliant environment at our office. We work like a family. Amazing. हम इस बात में बिलीव करते हैं. Although बोलने वाली बात नहीं है, जब से कोविड ने हमें से एक्चुअली बताया कि ये वर्क फ्रॉम होम क्या होता है. But seriously speaking, this has been something which has been inculcated in us even when we were not in COVID times. So if you have a certain job and you can do it while sitting at home, he never discouraged us. Okay. ठीक है. So इस तरह की बहुत सारी चीज़ें that helped me start my production career. Okay. Seriously speaking, when I joined, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम 9 साल की जर्नी तय करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे. बिल्कुल. But when somebody provides you with a platform and they provide you with a platform to grow as well, and they encourage you to take decisions, I think that has really helped me to what I am today. हाँ, होती हैं गलतियाँ, इंसान से ही होती हैं, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं.
जब कोई गलती होती थी तो ही वुड कम एंड टेल मी कि यार यू कुड हैव डन दिस बेटर, बट ही नेवर डिस्करेज्ड अस और द एंटायर टीम टिल डेट कि आप करें ना, ये ना, मतलब उसको यू शुडंट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको यू शुडंट स्टॉप इम्प्रूविंग, यू शुड ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग. गलतियां सबसे होती हैं, बट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. Definitely. So that's what has actually helped me a lot to actually with at SEEME production. Okay. All right, that's great. So listeners, हमारी बात हो रही है फैजान बलोच से, who's the COO of SEEME Productions. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर बाद बात को कंटिन्यू करेंगे फैजान से और बहुत सारी बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है फैजान बलोच, who's the COO of SEEME Productions. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने फैजान से पूछा कि उनकी SEEME Productions में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, which was great. फैजान, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि SEEME Productions as a production house, what are the services that it provides? थोड़ा SEEME Productions के बारे में हमें बताइए, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, किस तरह के TVCs, a lot of things. So just to give you a very brief summary of what SEEME Production is all about, we are into all about content, be it TVCs, DVCs. Okay. We've got sister concerns who are into the digital world as well. Okay. We've started our own YouTube channel as well. Okay. By the name of C Prime. Just to give you a very brief introduction of everything, the SEEME Productions itself is all about TVCs. Then we have Seesaw, which is our digital wing. Okay. जो कि हमारी digital videos के ऊपर और बाकी digital content के ऊपर काम करता है. All right. Then we have C Prime. C Prime is an actually a content-based initiative. Okay. The way things are moving in the digital world, we've always heard content is king. Oh, yes. And how content has been able to create or make waves or create change in different industries. We thought okay, this is the right platform to actually convey our message. And that's how we came up with C Prime. And mashallah say with the past 2 years has tremendous feedback. Okay. In the most interesting bit, we have feedback from Pakistan, outside Pakistan, and it has really been an amazing journey with that. Okay, and great. Then we also have international offices. We have one office in UAE. We have an office in London. So from there we are trying to take our name. हम चाहते हैं कि देखें पूरी दुनिया में डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया, डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर लिया. एंड वी आर फर्म बिलीवर्स ऑफ द फैक्ट दैट आर पाकिस्तानी टैलेंट, बी इट आर डायरेक्टर्स, बी इट आर DOPs, दे आर एट पार with everyone in the world. Let's not take any names over here, but all these directors have actually worked really hard to where they are today. Or it gives us an opportunity to take them to an international market as well, regardless of the fact कि उस market में हम इसलिए भी बैठे हैं कि हम वहाँ का भी काम करें, but also gives us an opportunity to take our directors to those markets and take show our work or what we've done in Pakistan and how we've done work in Pakistan. And believe me, in the past 1.5-2 years, people have been amazed because पाकिस्तान का unfortunately जो एक depiction है, एक perception है, it's very different from once they see what we are and who we are and when they talk to us. It's a very funny story. I was in for one of our shoots, I was in Thailand and क्या कहते हैं, got an opportunity. I was just sitting at a restaurant अकेले बैठे हुए खा रहा था. So it was a desi restaurant but owned by a Thai guy. तो मैं बैठा हुआ था, उसमें कोई और था भी नहीं. तो वो आया मेरे पास आके, इसने बोला कि you don't mind if I join in. मैंने कहा मतलब no issues whatsoever. We started having a conversation and he said कि आप you're from UAE or I think he said UAE or Saudi Arabia or Arabia. He used one of those names. मैंने कहा no, I'm from Pakistan. And he was
still, like literally still for almost 10-15 seconds. Okay. And he goes like, "You from Pakistan?" And I go, "Yes, I am." And he asked me, "But you are talking in English." And I was like, "Well, we Pakistanis can communicate in different languages like everyone else." Okay. And then he goes like, "No, but..." and then I asked him, "What do you think about Pakistan?" If I tell you what he told me, what he thinks about Pakistan, you'll only laugh for the next 5 minutes, right? Okay. When I asked him, "What do you think, how Pakistan would be?" So I live in a city by the name of Karachi. He's like, "A city?" मैंने कहा, "Yes, I live in a city by the name of Karachi." Okay. What do you think would be I don't know about cities, but from if you ask me, for me Pakistan would be more of like a desert with small people using camels to walk, and all houses to be made by stone or something. And then I was like, "Give me 5 minutes, let me complete my lunch, and then I'll tell you what Pakistan is all about." And then I showed him some pictures of Karachi. Initially was difficult to find because when you search Karachi on Google, the first couple of pictures are not really that you can share with people. But yes, I was careful enough, and then I showed him Karachi, and when I showed him the infrastructure that he was here, he's like, "No, this is not Karachi." It's a very very different misconception. Even with SEEME Production, जब हम अपना पाकिस्तान से जो हमने काम किया हुआ है, जब हम बाहर लेके गए, we did one TVC for one of the banks, and that particular TVC was shot in 18 days, exactly 18 days in 5 different countries. ठीक है. And वो मेरे ख्याल से जब हम एक क्लाइंट के साथ बैठे हुए थे तो हमसे आधा घंटा पूछते रहे कि ये कितने हफ्तों का प्रोजेक्ट था. एंड वी टोल्ड देम, "नो, एग्जैक्टली 18 डेज में शूट हुआ हुआ है 5 डिफरेंट कंट्रीज में." कहता नहीं, ये तो आपने ग्रीन स्क्रीन पे किया हुआ है या किसके ऊपर किया हुआ है. वी टोल्ड देम, "नो, इट इज एक्चुअल दो स्पेसेस." मतलब वी शॉट इन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर को रुकवा के पहले वहाँ पे हमने वो किया, उसको शूट किया. देन it was shot in London Eye के अंदर. It was shot in UAE. It was shot in Malaysia and Thailand. Oh wow. 5 countries within 18 days. Wonderful. But जब उन्होंने ये चीज़ें देखना स्टार्ट किया, they were like, "It was shot in 18 days." That is where they started coming to us as like, "Can this happen? And is it possible?" And it really made that difference because people एक misconception है जिसको हमें बड़ा इजी था वो वीडियोस के साथ दिखा के कि यार हम ये काम कर सकते हैं और भी करते आ रहे हैं. एंड फॉर अस दिस इज अ वेरी नॉर्मल वर्क. मतलब वी कैन गो मच मोर बियॉन्ड व्हाट वी यूजुअली हैव. So I think it's a brilliant understanding because it is we also consider it as a duty to portray the right picture of what we are, who we are as a nation, who we are as a country. That's more of a passion project where we actually can tell people, "Nahi ji, Pakistan is not about this. Pakistan is all the good things that you don't see, unfortunately." Yes. And SEEME has actually given us that advantage as well. Okay. Because if you go to SEEME, it's youtube.com/SEEME. I've seen the channel. If you go to that channel, आप अगर जाएंगे वहाँ पे अगर देखेंगे तो it is entertainment. Some of them are quirky enough. Some of them are very difficult to understand as a concept. But all of them have stories, and these stories come from people like you, me, everywhere. Okay. And there is a lot of content that people want to see, and good content. मतलब unfortunately, not dissing anyone, but the kind of content we see is something that is वो हमारे, मुझे लगता है कि वो much more inspired from our borders, right? Which we don't want to. We would rather want to showcase what we as a country face. ठीक है, हमारे पास अपनी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम पोर्ट्रे कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं of people who have nothing but they have been able to
go through everything against them and still make big, मतलब अपने आप को, अपना नाम उन्होंने इतना रोशन किया, इतना उजागर किया. हमारे पास वो स्टोरीज बहुत सारी हैं सुनाने वाली. Yes. और C Prime के through I have that opportunity to take those stories, take those narratives across, and it has been a brilliant journey. That's Sure, cool. has been a brilliant journey. Mashallah, say people have started joining hands with us as well on this one. We've got queries from international donors as well to talk about sustainability ke issues and environment ke issues. Wow. So that's there as well. So it's always it's something that helps us create awareness as well. So yeah, I think it's ticking a lot of tick marks for us. Yes. Where we wanted to see it. Definitely. Shukr, alhamdulillah. So content overall किस कैटेगरी में फॉल करता है? लाइक अगर मैं सी प्राइम के बारे में बात करूँ तो सबसे ज्यादा किस कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट आप लोग उस पर प्रोड्यूस करते हैं? एंड लाइक यू सेड के इंस्पिरेशंस मिलती है फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, बट आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि जो जितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बाहर दुनिया भर में इंस्पिरेशन ले रहे हैं लोग हमारे कंटेंट से. ऑल आवर ड्रामाज आर गोइंग प्लेसेस, लाइक इतने पॉपुलर हो चुके हैं. एंड आई थिंक लास्ट 5-6 ईयर्स में तो हमारी इंडस्ट्री, लाइक अगर कंटेंट इंडस्ट्री ओवरऑल की बात करूँ तो बहुत ज्यादा ग्रो की है. बहुत पसंद किया लोगों ने हमारी मूवीज को, हमारे टीवी सीरीज को, डीवीसीज को, शॉर्ट फिल्म्स को. They have been appreciated everywhere all over the world. So on that note we'll take a small break. हमारी बात हो रही है फैजान बलोच से, who's the COO of SEEME Productions. मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, फैजान से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है फैजान बलोच, who is the COO of SEEME Productions. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ऑलराइट फैजान, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा, हमारा कंटेंट ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, दुनिया भर में बहुत पसंद किया जा रहा है, हमारे ड्रामाज दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिवली इससे एसोसिएटेड हैं. उसके साथ साथ हमारी मूवीज बहुत अच्छी इम्प्रूव हो चुकी हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ओवरऑल कंटेंट जो कि इतना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है? हमारे सिंगर्स दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अमेजिंग म्यूजिक. हमारे ड्रामास, फिल्म्स, ओवरऑल मैं तो यही देख रही हूँ एज अ लेमैन अगर मैं बात करूँ कि हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है. I think a lot of it has to do with the influx of new brains inside this arena. Oh, I yes. think the influencers that we have now, the kind of content that they are creating, be it comic, be it social related issues, be it portraying a positive picture of Pakistan, और मैं specifically इस वक्त छोटे content, digital content की बात कर रहा हूँ, Okay. which actually has increased a lot recently because people have started talking about issues जो कि नॉर्मली आप बैठ के दोस्तों यारों में आप बैठ के डिस्कस किया करते थे. अब आप बैठ के वो माइक के सामने डिजिटली उसको पोर्ट्रे करें, उन थॉट्स को रिले करें, उन थॉट्स को. बट जहाँ आप बड़े कंटेंट की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म्स की बात करते हैं, येस पीपल आर स्टिल मेकिंग फिल्म्स. आई थिंक आई वुड बी आउट ऑफ place to talk about how this industry can improve because there are a lot of senior people who are very vigilantly trying to make something happen for Pakistan. I think some of in the recent past people like Nabil, people like Ahsan Rahim, people like Bilal Lashari recently, all of these people have tried their level best, even Wajahat Rauf, and a lot of other people. I'm sorry if I'm not naming all of them, but these people have actually tried really to improve the cinema scenario. Oh yes. From an outsider's perspective, I think one thing that does not work in their favor, I think I'm not an authority on this topic, but I think हमारा जो distribution ratio है of profitability, that's I think is a question mark because a lot of it goes out to the cinemas. Obviously they're also there to make money,
नहीं, बट वी नीड टू कम टू अ कंसेंसस. देखें, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने सोचना है कि अगर वो एक सैचुरेशन लेवल पे आ गया है और अगर आपने जो है उसको और बढ़ावा देना है, तो आप कभी भी उस प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, आप उस कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, आप उस कैटेगरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं. जब आप उस कैटेगरी को एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर और लोग आते हैं, उस प्रोडक्ट के और यूजर्स निकलते हैं. ठीक है, सिनेमा के अंदर इस वक्त जो आपके सिनेमा व्यूइंग हैबिट्स हैं, ठीक है, वो अब बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है. बिकॉज पहले आपके पास इंटरनेशनल कंटेंट या चले बॉलीवुड कंटेंट होता था देखने के लिए, जिसकी वजह से लोग सिनेमाज भी जाया करते थे. एंड इट वाज नॉट द ओनली रीजन, बट यस, इट वाज वन ऑफ द रीजंस, राइट? एंड दैट इज गोइंग डाउन. नाउ टू expand that category, to work on, to bring back people, you need to give you need to take an initiative for people to start thinking about making more movies where people can come in and watch. Now people would only people will only make movies is as simple as जैसे आपका प्रोग्राम is all about brands, right? Yes. ब्रांड उस वक्त कामयाब है जब वो पैसा बना रहे कंपनी के लिए. ठीक है, अगर एक मूवी मेकर जो है वो मूवी बनाने के बाद कमा नहीं रहा, दैट मीन्स इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन फॉर हिम टू मेक अ मूवी. ठीक है, अगर आप 1:3 के रेशियो के ऊपर काम कर रहा है कि अगर वो 100 रुपए लगाता है एक फिल्म को बनाने के अंदर, उसको 300 रुपए कमाने हैं टू मेक इट ब्रेक इवन. दिस आई थिंक इज द सिनेरियो एट द मोमेंट. दिस नीड्स टू बी फीसिबल फॉर producers, for directors who are making these movies, because जब वो feasibility बढ़ेगी तो हमारे पास नई movies बनना और ज़्यादा बनना start होंगी. Because जब वो credibility increase होगी, लोगों को पता चलेगा कि यार हाँ अच्छा काम आ रहा है, अच्छी movies आ रही हैं, why wouldn't you go to cinemas? ठीक है, people have shown that in past, चाहे वो नामालूम अफराद हो, चाहे वो ये अली ज़फ़र वाली फिल्म हो तीफ़ा एंड ट्रबल, चाहे वो ये हो कराची से लाहौर, या फॉर दैट मैटर कायदम जिंदाबाद का आई वाज मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था. एंड देन last but not the least, Maula Jat has proven everyone wrong. Broken all the records. Yes, because good cinema does exist, but not everyone would have the kind of leverage that one producer has. Everyone works under a certain understanding कि यार this is the kind of budget that I can work with. But जब आप उन budgets की बात करते हैं, obviously with the increasing inflation, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं महंगी. ठीक है, जो और आई थिंक इट्स 100% अंडरस्टैंडेबल व्हेन पीपल जो कि इक्विपमेंट लेके बैठे हुए हैं, उनको भी उनका अपना घर चलाना है, तो वो भी उसी हिसाब से प्राइसिंग रख के मूवीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं. बट अगेन वो चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो गई तो वो बजट बढ़ना स्टार्ट हो गए. बिल्कुल. नाउ जब मूवी महंगे बजट में बनती है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 5 करोड़ में मूवी बनाई है, तो उसको सिर्फ ब्रेक इवन के लिए 15 करोड़ बनाने हैं. जब मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जो मेरी अपनी लर्निंग है अभी तक की, उस केस के लिए द एंटायर इंडस्ट्री हैज़ टू, आई थिंक, कम टुगेदर एंड वर्क अराउंड अ सॉल्यूशन दैट दिस रेशियो नीड्स टू सब्सटेंशियली इंक्रीज इन फेवर of film producers, because once you that is what working on category means, कि जब आप उस कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे, उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 5 के बजाय 15 की बजाय उनको 10 कमा के ब्रेक इवन पे आना है, it makes more business sense to anyone, and that is when number of films would increase. जब वो फिल्म्स इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी तो लोग सिनेमाज में वापस आना स्टार्ट होंगे. ठीक है, और जब वापस आना स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली सिनेमा टिकट सेल्स बढ़ेंगी. सो इट्स अ साइक्लिकल इफेक्ट. अगर आपने उस कैटेगरी पे काम करना है तो यू हैव टू हैव अ सर्टेन पॉलिसी इन प्लेस वेयर इट हेल्प्स एवरीवन. अगर आप इसको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि यार नहीं बस मेरा काम सीधा हो जाए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन. ये मेरी अगेन नॉट एन अथॉरिटी ऑन फिल्म्स एट ऑल, बट एक छोटी सी एक एज एन आउटसाइडर, बट विद इन दिस इंडस्ट्री आई थिंक दिस कैन बी इम्प्रूव्ड. एंड एज यू सेड कि हमारा कंटेंट बाहर बहुत देखा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है. आई थिंक 10 out of 2 ड्रामास का हमारा रेशियो है, जो 2 ड्रामे हमारे वाकई में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, बट द रेस्ट 8 of the dramas, but
ठीक है, नॉट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अगर यश राज ने 15 फिल्में बनाई तो 15 की 15 जो है वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होती है। उनके भी ब्लॉकबस्टर का एक सर्टेन रेशियो है, तो वो उनकी फ्लॉप मूवीज का भी एक रेशियो है ऑफ कोर्स। तो यू पुट द राइट इंग्रेडिएंट्स इन इट एंड यू विल सी द फ्रूट विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट इफ यू थिंक नहीं यार ये फल सिर्फ मैंने खाना है, अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर सिर्फ सोचेंगे, इट विल नॉट हेल्प एनीवन। ठीक है, इट वर्क्स फॉर द प्रोड्यूसर्स, इट वर्क्स फॉर द क्रिएटर्स, इट वर्क्स फॉर द पीपल वर्किंग विद इन फिल्म्स, इट वर्किंग फॉर सिनेमा ओनर्स, इट वर्क्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वर्क्स फॉर एवरीवन। सो वो उस वक्त हो सकता है जब आप ये सोच के काम ना करें कि इसमें मुझे कितना फायदा होगा। बिल्कुल, ये उस वक्त होगा जब आप you need to look at the broader picture. जब आप कैटेगरी एक्सपेंड करने की बात करेंगे, that is going to help you out with that. That's definitely something very enlightening and I agree with you on that. So listeners, हमारी बात हो रही है फैजान बलोच से, who's the COO of SEEME Productions. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है only on अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है फैजान बलोच, who's the COO of SEEME Productions. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। So, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस रही हैं अब तक एंड मेरी भी बहुत ज्यादा लर्निंग हुई है ऑफ कोर्स। कैसा आपका एक्सपीरियंस है अब तक टीचिंग का, और स्टूडेंट्स किस तरह के लाइक जेन जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेन जी की डिफरेंट साइकीज होती है। हम जब स्टूडेंट्स थे एक डिफरेंट सिनेरियो था, ट्रेंड्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। सो हाउ इज योर टीचिंग एक्सपीरियंस गोइंग ओवरऑल? I think it has been brilliant 15-16 years. It's almost been 16 years that I've been teaching. Amazing. And one of the reasons why I came into teaching, it was more of a hobby at that time, but now it has become addiction rather than a hobby. So to be very frank, I've always been the reason why I actually started teaching was the fact that there were a lot of shackles that I wanted to break off. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जब मैं भी एक स्टूडेंट होता था तो मैं क्वेश्चन करता था कि यार ये ऐसा क्यों है। मिसाल के तौर पे अब मेरी एक 3 घंटे की क्लास है, उस 3 घंटे की क्लास में कहा जाता है कि जी आपको एक सीट पे बैठना है और मुसलसल एक बंदे की बातें सुनते रहनी है। और मेरा सवाल ये था कि जब मैं खुद ये काम नहीं कर सकता तो मैं ये एक्सपेक्टेशन बच्चों से कैसे रख सकता हूँ। ठीक है, फिर बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें थी कि एक स्टूडेंट जो है वो कैप पहन के बैठा हुआ है। अब मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता था। आपको मेरे बालों की लाइन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितनी कैप सब मिटाना तो पहले मैंने बचपन पहना करता था। सो ये बात कहना कि जी एक स्टूडेंट जो है क्लास में कैप पहन के बैठा हुआ है तो वो किसी टीचर को इट माइट put off someone who's teaching them. I seriously questioned that till date as to how would it put me off. Of course. It's हाँ, ये एक गोरों की वो था कि जब कोई खातून या कोई आपका सीनियर बड़ा आपके सामने से गुजरता है तो उनके एहतराम के अंदर आप टोपी उठा के उनको एहतराम देते थे, ये वेलकम करते थे या उनको सलाम करते थे। ये एक somewhere in the 1800s or the early 1900s this used to happen and was a custom. Abhi I tell my students I have no issues if they're wearing a cap in front of a bandana. I have no issues at all. I just want them to be मैं दूसरा मिसाल के तौर पे I would ask them कि if they want to come and sit on my seat, जब रात में एक नॉर्मली टेबल पड़ी हुई होती है, टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ना है, ज़मीन पे बैठ के पढ़ना है, घर से तकिया लेके आना है और ज़मीन पे रख के या गाँव तकिया लाना है और ज़मीन पे बैठ के पढ़ना है। लेट इट बी बिकॉज दीज गाइज नीड टू बी एट ईज। मतलब आप उनको अगर जैसा अभी आप बात कर रही थी द डिफरेंस बिटवीन मिलेनियल्स एंड हाउ नाउ द जेन जीज एंड हाउ देव चेंज्ड एंड हाउ व्हाट दे लुकिंग एट, उस वक्त हम कहते थे कि यार हमें स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे चाहिए तो यू शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट। और हम एक्सरसाइज भी उनको उसी तरह कराते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते थे थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ कि यार आपने फॉर एग्जांपल ये ब्रांड लॉन्च करके दिखाना है या आपने TVC करके दिखाना है, ये करके दिखाना है। ये जनरेशन वैसे ही स्ट्रीट स्मार्ट है। Yes. So now it's time to move towards skill sets.
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं जो कि आप हो सकता है कि आपको आगे जाके आपको फील ये था कि यार मिसाल के तौर पे कि मैंने अगर मैं ये एक छोटी सी चीज है कि आपने एक वीडियो एडिट की है, ठीक है। अब वो वीडियो एडिट आप अपने लैपटॉप के बिल्ट इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, पर वो करना चाहिए, वो खुद करें, वो सीखें, उससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो आपको आगे जाके काम आएगी। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। चाहे अब आपके पास इंटरनेट के ऊपर हर चीज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, इट्स ऑन यूट्यूब। एवरी अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू वर्क समथिंग आउट ऑन वो एक्सेल। Microsoft Excel is the world's best software from my perspective. मेरे 18 साल की कॉर्पोरेट कैरियर के अंदर मुझे लगता है कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर मैंने कभी नहीं देखा। PowerPoint comes second but Excel comes first, ठीक है। हमें Excel के अंदर टाइप करना आता है and that's it. We need to explore the formulas more what and everything. exactly it can help us out with. Yes. ये हमारे एनालिटिक्स के अंदर किस तरह हमारी हेल्प कर सकता है, बिल्कुल। किस तरह पिवट्स को यूज करके आप एक्चुअली मेक सेंस आउट ऑफ अ सर्टेन डेटा। सो ये वो चीजें हैं जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताऊँ। आई इन द पास्ट 16, 17, 18 years of my career, I have always tried to be available to students to come and talk to me, because again as I said, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बात कही थी कि काउंसलिंग इज समथिंग दैट आई फील कि हमारे पास नहीं है ज़्यादा। सो आई अप्रिशिएट पीपल, टीचर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनको मैंने पढ़ाया हुआ है और जो आप उसी इंस्टीट्यूट में वो बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, तो कभी मुलाकात होती है या अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आई टेल देम कि यार कीप योरसेल्फ ओपन टू योर स्टूडेंट्स, कीप टॉकिंग टू देम एंड गो इजी ऑन देम। मतलब ये स्ट्रिक्ट होने, हाँ जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पे आप जहाँ होना चाहिए वो बिल्कुल होना वरना चाहिए। हर चीज में स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक डिफरेंट ये बच्चे जो हैं ये एक डिफरेंट जनरेशन है, इनको आपने उनकी तरह ट्रीट करना है, आप अपनी तरह से ट्रीट नहीं हो सकते। एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि जैसे आप स्टूडेंट से आजकल के स्टूडेंट उसी तरह बिहेव करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी फिर एक्सपेक्टेशन, फिर दे लेट यू डाउन बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर इन अ डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट हैबिट्स। आप अगर अपनी बात करती हैं तो अलग है, अगर आप मेरी बात करती हैं कि मैं जब स्टूडेंट था और आज के जो बच्चे हैं, मैं जब स्टूडेंट था 2003 में, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, मेरी क्लास में 48 स्टूडेंट्स थे, उन 48 स्टूडेंट्स के पास 6 मोबाइल फोन्स थे, ठीक है। आज अगर मैं 48 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो 70 मोबाइल निकलते हैं इसमें से। एक मजाक ही सही, बट इट इज समथिंग दैट दे हैव मच मोर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू व्हाट वी हैड, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट बिट कि यार दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। हाउ यू टेक केयर ऑफ इट इज ये आपका गुण है, ये आपने संभालना है, आपने समझना है, आपने सीखना है कि उनको अपने बस में कैसे करना है, ठीक है। बिकॉज वो कहते हैं ना, somebody किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। Yes. I am a true believer of that. That's so true. That's so true. If you want to see a change in this world, you be that change. Wonderful thought, Faizan. Thank you so much for sharing all this with us. And I think teachers को भी बहुत help मिलेगी आपकी जो tips आपने अभी दी. Very helpful for me as well, of course. So Faizan, हमने बहुत सारी बातें की about SEEME Productions. You as a COO working for the best production house in Pakistan, and then you as a teacher. अब थोड़ा सा अपने बारे में as a person हमें बताएं कि what do you like to do in your free time? आपके hobbies, interests, likes, dislikes. जब भी free time मिलता हो, वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि आपने इस शो के लिए भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, तो आई एम श्योर यू वेरी वेरी ऑक्यूपाइड। लेकिन फिर भी उसके अलावा व्हाट आर योर हॉबीज? माय हॉबीज यूज्ड टू बी बिंज वाचिंग, माय हॉबीज यूज्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट, watching football, just the normal stuff. I wish I could have started reading. I've recently started doing it. It's pretty difficult in this point of time, but I've started reading abhi recently. And seriously speaking, I think it's a brilliant habit to have. Oh yes. But I am pretty sure it's going to take some time for me to become a regular reader. At least आपने start तो कर दिया. बिल्कुल start किया. Then seriously speaking, the first thing I have on my mind is, as soon as I'm done with work,
obviously that work is 24/7 आपके दिमाग में चल ही रहा होता है. बिल्कुल. But the moment I'm at home, I preferred giving the maximum time to my wife and my kids. Oh, how cute. And then obviously family, अम्मा अब्बा हैं, भाई बहन हैं. So try to give them as much time as possible. Of course. Because they are the true pillars on which you are standing. Oh yes. So उस pillar को आपने time देना बड़ा ज़रूरी है. Beautiful thought. That's so true. Wonderful to hear that. Thank you so much for coming over, for taking out time for this show. It was lovely talking to you today. Thank you so much. Pleasure. Alright listeners, I hope आपने आज की एपिसोड हमारी एंजॉय की. आपको हमारा फीडबैक अगर कोई देना हो तो जरूर दें. हमारे फेसबुक पे, हमारे सोशल्स पे जाके आप फीडबैक दे सकते हैं. इसी के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ ऑन ब्रांड बोलता है. तो आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.